the CLAT aspirants right now have a common question. Is it possible to crack this exam in the last 3 months? Most of the mentors would say yes. I would also say yes. Generally आपको लगेगा कि सर हमेशा हाँ ही बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं. बट आज के सेशन में मैं ना yes बोलूँगा ना मैं no बोलूँगा. I will only give you certain aspects, certain questions that you guys might have and my perspective on them, which is a very practical perspective. अगर आपको CLAT के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो you would understand what I'm trying to say is correct or not correct. ठीक है? Ultimately decision making is in the hands of you and your parents. ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के भी देख सकते हो and you will be able to identify whether it's possible for you to crack CLAT in the remaining time, which is roughly 3 months from here. Right? First very important question that a lot of you have is how will I be able to cover so much syllabus in such little time? CLAT has 5 sections, right? हमको लगता है कि these are huge and how will we be able to cover the syllabus at all? Please understand this, particularly in English, logical reasoning and data interpretation or maths, the syllabus is not huge. काफी easy है, काफी आसानी से syllabus cover किया जा सकता है, but we will have to put in practice after we are done with the syllabus, or along while we are doing the syllabus, we'll have to put in those mock tests, sectional tests and so on, right? Current affairs and legal reasoning थोड़े बड़े sections हैं. Current affairs में you will have a lot of backlog, so that will need to be covered. 1 month of backlog can be covered within a week. Believe me, मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. We have current affairs compendium, we have classes for each month. We'll give you GK question bank, 4500 questions रहेंगे उसमें. That will cover each and everything that you require to crack this particular exam in the current affairs section. And legal reasoning में क्या होता है कि this is a new subject for you all. So if you did not have, let's say, legal studies in your 11th and 12th standard, तो ये नया subject है. But believe me, for more than 50% of the CLAT aspirants, legal reasoning is the most interesting subject, right? So the person who is guiding you for legal reasoning at 12 minutes to CLAT is Kriti ma'am. She is herself a graduate of NLIU Bhopal, a top national university. She also did an LLM from GNLU Gandhinagar. तो आप देख सकते हो the kind of experience she carries, right? And she's been guiding aspirants for more than 5 years now. So she exactly knows कि remaining time में when a student comes with panic, how do we deal with that, right? तो syllabus जहाँ तक खत्म करने की बात आती है वो आराम से हो जाता है. It is not that vast. It is not like हम लोगों को आएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा इतनी जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होता. Second very important thing is if you believe that okay चलो I will try it out, I will do it. The question is how do I start my prep? And if I work hard, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर रोज 10 घंटे पढ़ेंगे तो कर लेंगे क्या? If we work hard, will we be able to do it? See, understand this is not about the amount of hard work you put in. It's not about the amount of hours you put in. It's about how consistently are you able to put in those hours. If you put in let's say 6 to 7 hours every day till the next 3 months, अगर आप रोज ये कर सकते हो ना, there is nobody who can stop you from cracking this exam. If this exam requires consistency. It is not rocket science. It is not even IIT JEE or NEET, which needs a lot of rote learning, which needs a lot of concepts. It's an aptitude-based exam that needs a lot of practice when you are thorough with the concepts. And that is what we are going to be guiding you at from day one. I have myself cracked CLAT and I was also at your stage where I used to believe कि यार होगा भी या नहीं होगा, बहुत ही difficult है. There is so much competition. People are doing so much better than me. How will I be able to ever catch up on those people who are actually scoring a 90-100 mock test already? Understand this. There are people who are going to start afresh. There are people who had started earlier but did not pay attention. Both of the people are in the same level right now. आपने सिर्फ CLAT में इसलिए अभी तक अच्छा नहीं किया because you did not put in the effort. Either you didn't start or you started but did not, you could say, was not serious about it. अभी हो सकते हो and this is the right time to start it. Last के 2 साल के जो पेपर्स आ रहे हैं CLAT 24 and CLAT 2025, they have been on the easier side. We expect that again from CLAT 2026. Paper is going to be of a better standard but not as vague as 24-25. तो उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से properly prepare करेंगे. We've launched a batch called Varchasva and Varchasva Plus. This is a crash course. It will complete all your syllabus, give you 40 mock tests, 30 of CLAT and 10 of ALET, so that you can cover both these exams properly. Will give you more than 4500 questions in GK so that you can solve a lot of them. And क्या होता है कि GK मैंने पढ़ लिया, अभी मैं श्योर नहीं मुझे आता है या नहीं आता है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ ना जब ठीक से, then I am able to recognize कि if I know or I do not know, मैं कुछ कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, that gets easier after that, right? उसके अलावा मेरे को लगता है कि लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, जब 2 महीने बचेंगे, जब 1 महीने बचेंगे, यू विल ऑलवेज बी इन पैनिक, राइट? So we have a lot of strategy classes to align your mind in the right direction. All the educators together do certain classes
there are certain classes that are done by me myself, and I will be guiding you as to what are certain things that everybody should keep in mind. And again, brutally honest when it comes to this. मतलब I'm not going to be like कि अरे तुम चिंता मत करो तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन. We're brutally honest कि अगर तुम ये पर्टिकुलर चीजें करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. अगर तुम्हें एफर्ट नहीं डालना तो नहीं होगा. Only get this batch if you are willing to put that consistent effort of 6 to 7 hours every single day. If you feel that नहीं मेरा तो बोर्ड एग्जाम है, मेरा तो ये है, मेरा वो है, don't take this. There is no point of this. I am not here to just sell a batch. I'm not doing a sales pitch here, nothing like that. I am here to help you guys. We want to crack this. You can join us. We will be guiding you. Our top NLU graduates, the team of top NLU graduates are going to be guiding you because उनको पता है कि strategically कैसे करना है, concept wise कैसे करना है, practice कितनी करनी है और कैसे करनी है, और जहाँ पर problem आ रही है ask us out. ठीक है? We have something called the Shakuntala Scholarship. So if you are a part of any other coaching institute and आपको लगता है कि भाई वहाँ पर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, but I am generally doing well in the mocks, अगर आप यहाँ से भी कर रहे हो तो you can enroll for this particular batch. Will give you a 100% refund of your fees if you get all at a rank under 300. This is called the Shakuntala Scholarship. We've had more than 25 Shakuntala scholars in CLAT 2025, and we are definitely planning to add more in this particular exam. So keep it simple. You have it in you to crack this. It's just that कि हम लोग ना वो थोड़ा सा एक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आगे जाए या ना जाए. जिन लोगों को बोर्ड्स का प्रॉब्लम है ना, आप खुद भी तो सोचो, बोर्ड आपका फेब एंड में स्टार्ट होगा. CLAT is on 7th of December. You'll have entire December, entire January and entire February to prepare just for boards. मैंने बोर्ड एग्जाम लिखा है अपने करियर में, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए वो साल भर इज अ हाइप. बिकॉज आपकी क्लास में 50 बच्चे, लेट्स से यू आर फ्रॉम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, जहाँ से भी हो, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स लेट्स से आपके सेक्शन में. Out of 50 of them, not more than 5 are preparing for any competitive exam like CLAT or other exam. तो बाकी 45 are just preparing for boards and there is a hype. Teachers are like कि boards की तैयारी करो, ये करो, वो करो. Okay, let's say you get a 90% in boards. Then कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा है? कोई भी नहीं, ठीक है? Not a single college. Understand this. CUET देना पड़ेगा बाद में. There is a lot of competition in CUET. DU के कॉलेजेस के लिए एकदम मारा मारी है, आपको पता है ये बात. CLAT अगर आपका क्लियर हुआ ना, आपका बोर्ड विल बिकम अ केक वॉक, बिकॉज आपको दिसंबर के मिड तक ही पता चल जाएगा. विद इन 7 to 10 days रिजल्ट आ जाता है CLAT का, तो आपको पता चल जाएगा as to how this exam is going to happen and what you could say is the final result. फिर आप बोर्ड पर आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. अगर आपका लेट्स से सिलेक्शन हो जाता है फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बोर्ड्स में 45% इसकी यू कुड से एलिजिबिलिटी है, बट बोर्ड्स में आप अच्छा ही करना है. मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल मत करो, बिकॉज 12th के मार्क्स भी आपके सीवी पे हमेशा रहते हैं. इट लुक गुड इफ यू हैव अ डिसेंट स्कोर इन 12th, राइट? तो CLAT और 12th को मैनेज किया जा सकता है. इट्स जस्ट दैट कि कितना आप एफर्ट डालने को तैयार हो और वो थोड़ा सा आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी. यू नीड टू बी अ लिटिल मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हाउ यू वांट टू डू दिस एग्जाम, राइट? इट इज इन योर हैंड नाउ वेदर टू डिसाइड कि एग्जाम करना है या नहीं करना है. लास्ट के 3 महीने में हो तो सकता है, बट अगेन नॉट विद पीपल हु आर कैजुअल अबाउट थिंग्स, है ना? तो अगर आप पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा कैजुअल है, प्लीज आस्क हिम और हर टू नॉट टेक दिस एग्जाम फ्रॉम हियर. अगले साल दे सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि यू कैन पुट इन दैट हार्ड वर्क 6 to 7 hours एवरी सिंगल डे, है ना, आपको स्कूल कम करना पड़ेगा. आपको हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा प्रिपरेशन है ना? शुरू के 20-25 दिन बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ भी हम नए करना चाहते हैं तो, एंड ये एग्जाम प्रेशर के साथ आता है, अंडरस्टैंड, राइट? शुरू के 20-25 दिन अनकंफर्टेबल होंगे. इफ यू गेट थ्रू दिस 25 days, यू आर श्योरली गोइंग टू डू वेल, क्योंकि आपका वहां से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. 20-25 दिन ज्यादातर लोग होते हैं कि उसी में पीछे आ जाते हैं, दे डोंट वांट टू डू इट. फिर वो बहाने बनाते हैं कि हम ये वाला एग्जाम इस साल नहीं देंगे, अभी तो मेरा स्कूल है, अभी तो ये है, वो है. If you have a single-headed attention toward this exam, there is nobody who can stop you. You can always contact us on this number. We will be happy to guide you about everything and anything that you need to know for CLAT or any of our batches. You can always visit 12minutestoclad.com, download our app from Google Play Store and App Store. You can always use my code Malpani for anything, for any discount that you need on 12minutestoclad.com or on our apps, right? All the best, guys. We are happy to guide you. Are you willing to work hard? That is a question that is very important for those people who are starting the preparation the last 3 months. All the best.